थैंक यू। नेक्स्ट पढ़िए अंकुश। Ankush, you are a good boy, but you have lot of different. Please, Demerits. You are good boy, but you have a lot of demerits. Please, you should try to leave पुड़िया in your beautiful life. अच्छा अभी भी खा रहे हो पुड़िया? Beautiful life. I love you दरोगा बाबू. Good. जो भी लिखे हो उसके लिए ताली बजाओ. क्यों खाते हो पुड़िया? क्लास में भी खा रहे हो. गजब हाल है. उसी में लिखा हुआ था कभी भी चबा रहा है पुड़िया. क्या देखो अंकुश, you are smart, but your teeth is very and you. लो सब ये है. गुड. जो भी लिखे हो उसको हेड्स ऑफ. फिर दूसरा क्या लिखे हो? यू आर वेरी स्मार्ट बट योर टीथ इज वेरी डर्टी. यू नो व्हाट आई एम सेइंग? रजनीगंधा बॉय. वेरी गुड. वेरी नहीं ठीक है, अच्छा है, अच्छा है. डिमेरिट्स लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट. सुधरोगे कैसे? कमियां कुछ रहेगी वो लिखना है. और ठीक ऐसे ही भड़ास निकालो, पता भी नहीं चलेगा, ढूंढते रहो कौन लिखा. यहाँ देखें, प्राउड ऑफ यू दरोगा जी. यू आर ऑल राउंडेड स्टूडेंट एंड योर नेचर इज गुड बट यू नीड टू हार्ड वर्क. ही इज अ गुड बॉय. ही इज आवर फ्यूचर दरोगा जी. ट्राई टू डू वर्क हार्ड ऑन स्लीपिंग इंग्लिश. अच्छा स्पीकिंग इंग्लिश. ये कौन भाई पुड़िया दिए हो? He is good boy. He is good boy. He is calm down. He needs to work on grammar, reading and writing. He has lots of hesitation. He is good boy. He is intelligent boy. He is teacher दरोगा जी. भैया he is classmate. भाई जब इतना छोटा लिखना था इतना लंबा क्यों दिए भाई? ही हैज़ गुड पर्सनालिटी. आई थिंक ही विल बिकम गुड स्पीकर. दरोगा जी आई लव यू. अच्छा ठीक है सिपाही जी रुको तुमको भी. एज फार एज आई नो ही इज गुड बॉय बट ही लुक लाइक लालू यादव. He look like लालू यादव. नहीं ये नहीं, ये अपना उधर से नैन लड़ा रही है, पीछे बैठी हुई है. आगे देखो क्या लिखा हुआ. अंकुश यू लुक स्मार्ट एंड एवरी टाइम क्या लिखा है? स्मॉल फेस. पीपल ट्राई टू do. अच्छा ट्राई टू इम्प्रूव योर इंग्लिश. ट्राई टू बी बेस्ट एंड इम्प्रूव योर इंग्लिश. बाप रे बाप कुछ लिखा है. गुड बॉय. दरोगा साहब आई लव यू. Do arrest me. अच्छा अच्छा. दरोगा बाबू आई लव यू. बगल में बैठता होगा पक्का तुम्हारे लिए. दरोगा बाबू आई लव यू. डू अरेस्ट मी. देखिए फिर मिला एक. देख लो हर ग्रुप में मिलता है. एक ही आदमी है क्या ये? अंकुश इज अ गुड बॉय. He used to improve body language. He always makes excuses. He needs to improve grammar as well as speaking. His teeth is like he used tobacco always. He needs to improve his personality, confidence and dedication. He should not use in classroom. ध्यान दो इस सब पर. चलो ठीक है, थैंक यू. तो भाई ऐसे क्यों, थोड़ा इज्जत कर लो भाई. ये देने का क्या मतलब है? बाप रे बाप. If you have come to rebel, so don't think so much. तुमको बताया है क्या ये? बहुत सोचती है. If you have come to rebel, so don't think so much. One day you will become. गलत सेंटेंस है. You will become fluent speaker. Remember, you will have to be regular. Will do miracle. चलो ठीक. Your big hand. She is very silent in class. इतना ऑब्जर्वेशन किसका है भाई? नेक्स्ट. You are very shy girl. You need to more be. क्या लिखी है? लिखा है गीतालियन.
गीता लायन. You are beautiful girl, but you are extrovert girl. क्या है? Speak English student. पता नहीं क्या लिखे हो यार. अरे थोड़ा साफ साफ लिखो. संजना is a beautiful girl. Proud of you, संजना. लग रहा है मूवी का नाम ले रहा है. She is good. You are not regular student in class. क्या कर रहे थे भाई? सुनो, संजना is beautiful girl. Proud of you. You are not regular student. एकदम इसी करते एकदम ऊपर बिठा के धड़ाम से. यहाँ देखो बहुत मेहनत किया है. Needs to improve personality. हाँ देखिए ये लव लेटर. संजना is good girl. संजना is good girl. He speaks. लड़की है भाई. He speaks English confidently, but she is not regular in class. She is good singer. She is a nice dancer. चलो म्यूजिक ऑन, डांस करो. She is my good friend. She is beautiful girl. I love you, Sanju. She is smiling nature. She is important for me. ये लिखी होगी कजरी. क्या देखो गुड गर्ल. ये कौन पेज बचा रहे थे भाई? क्या लिखो? She looks like Geeta from दंगल. She looks like Geeta from Dangal. अच्छा. She look like Geeta from Dangal. Proud of my छोड़ी. अरे गजब. ये कोई छोड़ा था क्या? शायद. अच्छा ठीक. या देखो I love you संजना. अरे गाना वाना भी लिखो उसके बाद. She is beautiful girl. She is very beautiful girl. She is my best friend. She is एब्सेंट कर. भाई तुम सारा का कचरा कर दिए जो भी लिखे हो. absent का APSEND. संजना के तरफ से ऐसा प्यार मत करना भाई. She is very absent girl. She asked me on night. She asked me on night time message. पूछती है. टॉपिक क्या है? absent रहती है. इस देखो. अच्छा. पक्का निक्कू होगी. absent के स्पेलिंग क्या लिखी हो? बाप रे बाप. नाइट में बात करती हूँ. मजा आ गया. आगे देखो. I know her before birth. She is my junior. She is my junior. She is good but need to be regular. She doesn't participate in class activities. She is too introvert. She needs to work body language, grammar, as well as speaking. Even her topic delivering is not expected. Expected नहीं होगा यहाँ. जो भी लिखे हो अमन चमन. I wish he will be. Wish लगा दिए तो would होगा, will नहीं होगा. I wish he will be good speaker in future. She is most regular class. Not. You know. अच्छा not है. She is not regular in class. You know regularity is most important for success. यही कौन who has given चुनौती like this? थोड़ा यार इतना मेहनत खोलने में भी लग रहा है 3-4 हाथ लगेगा. देख ना. My God. She is good girl. She क्या लिखी है? She trying to speak well. She is not regular student. If she regular in class, she will good speaker. चलो thank you. He is confident and तुम्हारा ही है. yes. चलो ठीक है. Come on. He is confident and nature student. Speak English. Sir, Natural. nature लिखा है. He is confident. And nature. He is confident and natural student. I don't know. He is confident. Speak English we in class. Well in class. He speaks English well. Clap for him. Thank you. He is hardworking and punctual. He is hardworking and punctual. Next one is पढ़ो. Amit, you are bad boy baby because boy. you अच्छा, bad have boy. no
You are bad boy because you have no patience to do anything in to class. do in the class. पक्का डिस्टर्ब करता होगा उसको. आगे देखो. अरे भाई. He is good boy. He is good boy and I wish him to do better in life. ये कौन दिल बना कर दियो भाई. Thank you भाई. Good. Thank you बात भी हो सकती है. क्या देखो. Amit is good student. He is try to देखो भाई जो भी लिखे हो he is try खतरनाक इंग्लिश है. He is try day by day improve yourself. He is a discipline. He is not have teamwork. बड़ाई कर रहा था कि बुराई कर रहा था भाई. He is not teamwork knowledge. Knowledge. Eye contact is very low. Yes sir. आँख मार के बोला करो. नेक्स्ट. चश्मा भी आई कांटेक्ट देख लेते हैं. देखो भाई ये आई नो अब अमित ही गुड. He always try to speak English. He is confident. Confidence is too high. When this is want to say he. I want to say. Just. He mug up. Mug up means. मगर तो रटना. Mug up a sentence. He need to understand properly. Needs to work on grammar. He is very eager to know everything, even it's your personal and future. Personal भी जानना चाहते हो. Would be good speaker very soon, and he will be government teacher. Teacher ही बनोगे. बोल के रखे हो. हमको पता नहीं था भाई. Amit is a good boy and regular in the class, but he needs to more energetic. अब कहाँ एनर्जी ले जाओगे इसका? ऐसे भी किसी को बोलने नहीं देता है. यहाँ देखो, he is confident but he needs to improve his grammar. ठीक है, good. ये लो. It is, पढ़ो. Very laborious boy. He is very much curious about his study. I like his sober quality and I admire him a lot of this. He is a very kind, hard person. क्या लिखा है? Hearted person. जो अच्छा रहता है समझ जाते हो. सर ये क्या लिखा है? निगेटिव वाला हमको पढ़ा देते हैं. बहुत स्मार्ट हो भाई. जितना अच्छा लिखा रहेगा पढ़ लेगा. और जैसे ही नॉट थोड़ा सा इम्प्रूव करने की जरूरत है. सर पढ़ दीजिए. Admire him for this. He is very kind-hearted person. अमित भैया पढ़ो बहन. Next. Amit bhaiya is very smart boy. He is very funny student and very active. I am proud of you. I am proud of him भैया. Thank you. बाप रे इतना बड़ा कौन लिखो भाई. Good boy. He is smart and punctual boy. He delivered speech. Sing a song. Sorry bro, but bro you good. Thank you. Thank you. Amit is a good speaker. You are very intelligent boy. He is always आगे पढ़ो नालंदा. He is always He always maintain. What? क्या लिखा है? Love you अमित. अगले जन्म में मिलेंगे. अच्छा पीछे है. अमित always in confident but English बोलते बोलते गाना गाने लगता है. इंग्लिश बोलते बोलते गाना गाने लगता है. Otherwise, he is best student, your partner. चलो next. He is very intelligent boy. He is a smart boy. He is good speaker. He is classmate. He is a regular boy in class, outdoor and indoor. भाई, Amit is very good student. He always try English confidently, but he is confused nature. Thank you. पढ़ो. He is always try to speak in English. One day he is a good speaker. Thank you. He is good boy. He is intelligent boy. Thank you. बोल रहा है thank you. अमित मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड हैं. इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं. I like this confidence And dance. Confident. इंग्लिश में लिखिए. इंग्लिश में नो हिंदी. आगे देखो. अमित इज पढ़ो भाई. अमित इज वेरी रूड बॉय. Cute boy. ऐसे भी तुम अमित को दोगे. Cute boy sir. क्यूट है सर. इसीलिए तुम पढ़ लिए. अमित इज वेरी क्यूट बॉय. ही ऑलवेज क्या Group. He always grab the opportunity. Grab the He need opportunity. to work on grammar. He is very funny. He always call me D. Call me D. Oh. D. Call me D. I like her confidence. If he goes in this way, he will be good speaker. Thank you. दीदी का पैर छू. Amit is
Amit is good girl. पता नहीं कौन लिखा. Amit is good boy, not girl. क्या देखो? He is good, always ready to speak and participate in all activities. Always try to give his 100%. Thank you so much. भाई ये सब कौन देते हो भाई? Macro है सर, ये macro. लगता है गिर जाता है क्या उसके हाथ से? Good guy. इधर बनाने. Good dance. dancer. रखो भाई, सेव करके Because रखना. I don't know how to dance. Amit क्या come to class becomes happy. Class becomes happy. Very good. एक ही लाइन में लिख देते हैं अमित इज जोकर. He look like क्या लिखा है? Smarter student. He looks like a smarter student. Habit was wise very Habit was very क्या गुंडा boy लिखा है? nature book. Nature nature guys. He look like एक लाइन में 7th standard. Oh, sir. He look like 7th standard student. बढ़िया था नहीं इसलिए पढ़ोगे. Habit क्या was देखो? very. Gain some muscles. अरे यार लिख रहा है gain some muscles. ना बेइज्जत कर रहा है यार. Amit, you are friendly boy, but few days you are absent class. Please be regular. You are active boy, and any activities your performance good. Please practice translation. You are good boy. चलो ठीक है, thank you. Thank you.